स्टूडेंट्स, मैं अनिरुद्ध सिंह अकेला पीजीटी फिजिक्स केवी न्यू कैंट प्रयागराज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका टाइटल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑल द व्यूअर्स are requested and advised to watch all the videos so that you can understand the matter properly and systematically. To find the force, to find the expression for the force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, we see or observe a small experimental setup shown here. In this experimental setup, a circuit is completed with the help of a battery, switch, connecting wire, tripod, a stand, and conductor AB. Conductor AB is suspended like this with the help of this stand. A horseshoe magnet is arranged here in this way. Here, as soon as the key is put on, then this conductor AB start to move. That is, there is deflection in this conductor. The amount of this deflection or movement depends on the different orientation of this horseshoe magnet. यहाँ पर फोर्स के फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एब्सेंट है, तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि इस मैग्नेट को इस प्लेस से रिमूव किया जाए और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाए तो इस कंडक्टर में कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लाया जाता है, वैसे इस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन और मूवमेंट होता है। दिस ऑब्जर्वेशन shows that a force is acting on the current carrying conductor if current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. Okay, now we will find the expression for the force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. For this, a small figure is shown here. There is a here this arrow represents uniform magnetic field, and in this uniform magnetic field a conductor is placed in this way. The length of this conductor is L and cross sectional area is A, and this conductor is placed in this field in this way that this conductor makes an angle theta with the magnetic field B. Here we consider a current element dl in the conductor. In this dl we consider an electron which moves towards this. For this movement, this conductor is placed in the potential difference. It means
this conductor is connected with a battery. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन से मूव करना शुरू करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शंस का मूवमेंट दिया गया है, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर का दिस एंड नेगेटिव terminals of the battery or this end is connected with a positive terminal of the battery. This potential difference के कारण electrons start to move in this way. But we know that the traditional current is taken in the opposite directions of the electron. So the current direction is here this way. I current is flowing through this conductor. It means this current I makes an angle theta with the magnetic field B. Now, you know that the this conductor, current carrying conductor, experiences a force, and the direction of this force can be determined with the help of Fleming's left hand rule, which is already discussed. So, the force experienced by each electron will be this F is equals to minus E Vd cross of B. Since we know that the force experienced by a charged particle moving in magnetic field B is given by Q into V cross of B. By using this formula, we can write this one. So this F represents the force experienced by one electron present in this current element D. Now we want to find the force experienced by all the electrons present in this DF. So first we will find how much electrons in this current element DF. Here suppose n be the number density of the electrons. Number density of electrons means number of electrons present per unit volume. That means number of electrons per unit volume. यदि हम लोग इस dl एलिमेंट का वॉल्यूम फाइंड कर ले तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो number of electrons present in dl फाइंड हो जाएगा. So what will be the volume of this dl? The volume of this dl is cross sectional area A into length, that is dl. A into dl gives the volume of this dl. So n into AdL gives the value of number of electrons present in the element dl. So how much force will we experience by this number of electrons? Suppose this force is df. So df is equals to number of electrons present in dl into force experienced by each electron. So if we put the number of electrons, that is NaDl, and force experienced by one electron is this one. So expression will be this. Now this expression is rearranged in this way: minus n e a v d into dl cross of v. Here the direction of
current, that is dl, is opposite to the direction of this drift velocity of a electron. So in current electricity we have studied there is a relation between current flowing through the conductor and drift velocity of the electron. So I is equals to NEA. So in place of minus NEAVD, we write the value I. So this expression, this formula becomes I dl cross of B. Here negative sign represents that direction of dl is opposite to that of VD. So this I dl cross of B represents here force expressed by the electrons present in current element D. Now we have to find the force expressed by this conductor. So if we integrate this force dF within the limit across the end of this conductor, then we uh, uh, are able to uh, we reach at the formula for the force on a current carrying conductor. So integrate this one. On integration of this df, we find total force F, that is force on the current carrying conductor. So this is equals to this one. Here I and B, that is magnetic field, is constant. This integration lies over only dl. Here integration of dl from across the end of the conductor will equals to L, that is whole length of the conductor L. So this formula becomes F is equals to L into I cross of B. This is in the vector form. This F is the in vector form, and this formula can be written in the scalar form also. So F in a scalar form, F is equals to I L B sine of theta, and direction of this force is given by the Fleming's left hand rule. ओके, तो हम लोग जो अभी एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंट सिचुएशंस हमने कहा था कि मैग्नेट को रिमूव कर दिया जाए तब फोर्स क्या होगा, मैग्नेट को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कराया जाए तब फोर्स क्या होगा। तो हम लोग इस फार्मूला से हम डिफरेंट सिचुएशंस में हम फोर्स exerted on the current carrying conductor पर फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है, रिमूव कर दिया गया वहां से। प्रेजेंट को मैग्नेट को रिमूव करने का सेंस क्या है, बी इज जीरो, सो दिस एफ विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स will be experienced by the conductor. Now, if magnet is available present, then the value of F mainly depend on this theta, sine of theta. For a given condition, I, L, B will be constant, and for different orientation of the magnet, this sine theta will be different. Here we can discuss one or two special case here. Suppose theta is equals to 0. Theta is equals to 0 means the magnetic field
direction and current direction will be same, that is in the same line. So theta will be 0 and sine 0 is 0, so there is no force. And similarly, if theta is equals to 180 degree, that is I and B both are in opposite directions, in this case also force is 0. It means the magnetic field B, or we can say that magnet is arranged here in this way that the magnetic field B and current I both are in the same direction or in anti directions, then the force experienced by the conductor will be 0. And what will be the value of force if theta is equals to 90 degree? If theta is 90, it means magnetic field B and current direction both are in perpendicular. And in this case, sine theta, that is sine 90, is 1. So F is equals to ILB, which is the maximum force experienced by the current carrying conductor. So F max means maximum force experienced by the current carrying conductor is ILB, and this maximum force is experienced by the conductor if the conductor is arranged in uniform magnetic field perpendicularly. So, uh, this is the final formula for force in a scalar form. Now, we want to discuss some numericals here, uh, because it is very important for the CBSE examination. One numerical question is here. A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. अब देखिए यहाँ पर वन क्वांटिटी दिया हुआ है, मास इज 200 ग्राम एंड लेंथ इज 1.5 मीटर. कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में इस मास और लेंथ जो अलग अलग टू क्वांटिटीज गिवन, उसके लिए सिंगल क्वांटिटी गिवन होता है. इस तरह से लैंग्वेज में मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि हम आगे फार्मूला में देखेंगे. Yes, carries a current of 2 ampere, that is I is equal to 2 ampere. It is suspended in mid-air in uniform magnetic field B, shown in the figure, this one. What is the magnitude of the magnetic field this B? तो इस डायग्राम में हम लोग यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस कंडक्टर का लेंथ L है, करंट I फ्लो हो रहा है और कंडक्टर इस स्क्रीन के प्लेन पे में रखा हुआ है. ड्यू टू मास ऑफ द कंडक्टर, a gravitational force, that is weight of this conductor, is acting vertically downwards. And in this figure here, magnetic field B is shown here, circle with cross mark, and circle with cross mark represents the direction of magnetic field inside the screen of the plane of the screen perpendicularly. So we can say that the direction of magnetic field B and current I here is 90 degree perpendicular to each other. So the force experienced by this conductor will be maximum, and that will be IL into B. ILB. And this force must be in the direction of opposite to the weight direction of this weight, यानी vertically upward direction में यह ILB होना चाहिए. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इस सिचुएशन को फाइंड कर सकते हैं, और यह मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वह mg के अपोजिट होगा. अपोजिट होगा तभी जो है यह कंडक्टर मिड एयर में सस्पेंड हो सकता है.
यदि अपोजिट और इक्वल फोर्स नहीं एक्ट होगा, यह सस्पेंड नहीं। तो सस्पेंड होने के लिए क्या चाहिए, ये देखिए हम लोगों ने फाइंड किया कि वी फाइंड दैट देयर इज एन अपवर्ड फोर्स F of the magnitude ILB sin 90 degree is equals to ILB, that is for mid-air suspension. This must be balanced by the force due to gravity, that is mg is equal to ILB, and B is equals to after rearrangement B is equals to mg upon IL. Here this m upon L represents mass per unit length. In this question, mass and length both are given separately, but in many questions for these two quantity single a statement is given, mass per unit length is something. So m by L के प्लेस पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर m, g, I, L इन सभी की वैल्यू यहाँ पर नोन है, हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेट करें, तो यह वैल्यू आता है 0.65 of T. What is T here? T is the SI unit of magnetic field, Tesla. Now, you know that the Earth magnetic field is at any place is approximately 4 into 10 power minus 5 Tesla. This value is ignored here. No consideration of this value is taken here. तो यहाँ पर B की वैल्यू जो है ये फाइंड हुआ। इट मीन्स इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पर इस सिचुएशन में अप्लाई किया जाए तो यह कंडक्टर जो है मिड एयर में सस्पेंडेड रहेगा। ठीक, ओके ओके। I am giving you two numerical questions for assignment. Very important questions are given here. One is here, wire of length L carries a current L I along the x-axis. That is यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में यदि लिखा जाए तो L यानी I लिख सकते हैं या L इंटू I लिख सकते हैं L के प्लेस पे, and magnetic field B is equals to this one, Tesla exists in a space. Find the magnitude of the magnetic force on the wire. तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, I L क्रॉस ऑफ B। L की वैल्यू हम लोग कैपिटल L I लिखे क्योंकि I x डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से गिवन है, तो L I क्रॉस ऑफ B यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। I क्रॉस I, I क्रॉस J, I क्रॉस K सबकी वैल्यू हम लोग 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, वहाँ हम लोग फाइंड करेंगे और लास्टली हम लोगों का ये आंसर आएगा। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है जो कि NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लूडेड at 30 degree with the horizontal, a thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground. The plane is located in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla in the vertical direction. For what value of current can the rod remain stationary? The mass per unit length of the rod is this one. देखिए इस क्वेश्चन में mass per unit length is given, not mass and length both are given separately. तो इस तरह से हम आप जो है इन दोनों न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंसर भी यहाँ पर गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, देखिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।
सब्सक्राइब करने से आपको जो नया वीडियो और जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।